Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. So let's start the another session of the chapter acid, bases, and salt. As you know that we are discussing about the salts. So the next salt that we will start is washing soda, which commonly known as washing powder. So the chemical name of washing soda is sodium carbonate, and the chemical formula is Na2CO3. Basically, it is a type of hydrated salt. What type of salt? Hydrated salt. And this hydrated salt, as I have discussed with you, that all hydrated salt contain a fixed amount of water with that, and it contain 10 molecule of water, that is known as water of crystallization. What that is known as? Water of crystallization. So water of crystallization, as we have discussed in the previous session, that what is water of crystallization. So this sodium washing soda have a formula Na2CO3 into 10H2O, and it is also known as hydrated sodium carbonate. I think it is clear that why that is known as hydrated sodium carbonate, because it contains this 10 molecule of water. Now how it can be prepared, and either the nature is not given in this slide, but you should note down that washing soda is of basic nature. That means if we dip the litmus paper, red litmus paper, into the washing soda, it will convert it into blue. So washing soda is basic in nature. How it can be created? Sodium bicarbonate, or you can say sodium hydrogen carbonate. When it is heated, then it forms sodium carbonate, water, and carbon dioxide. These are the products. And the sodium carbonate that we got here, when this sodium carbonate is going to react with water, either it is written there that 10 molecule of water, but you are going to react only with water. So this water, when reacted with sodium carbonate, then it form a compound, that is hydrated sodium carbonate, Na2CO3 into 10H2O. So this is the manufacturing of washing soda. And this washing soda can be manufactured by the brine also, because with the help of brine we make sodium bicarbonate, and with the help of sodium bicarbonate we make sodium carbonate, and this sodium carbonate is used in making the washing soda. It is used in glass, soap, and paper industry, because the main function of it is to provide cleaning. In manufacturing of sodium compounds like बोरेक्स, बोरेक्स पाउडर का आपने नाम सुना होगा. ये बोरेक्स पाउडर मैंने भी देखा हुआ है, और ये मुझे ध्यान है कि जब हम कभी कैरम बोर्ड खेलते थे, तो कैरम बोर्ड के ऊपर उसकी सरफेस को स्मूथ करने के लिए नो डाउट टेल्कम पाउडर भी डाल देते हैं, पर तभी भी बोरेक्स पाउडर का कुछ आता था जो हम उस पर यूज किया करते थे. सो बोरेक्स पाउडर बनाने में काम आता है. एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, हमारे लोगों के घरों में भी वॉशिंग पाउडर यूज होता है. फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इट इज ऑल्सो यूज फॉर दैट पर्पज. सो दिस इज वॉशिंग सोडा. हाइड्रेटेड सॉल्ट है, बेसिक नेचर का है, एंड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड by these reactions. Now the next one salt is plaster of Paris. POP. So that's why the short form is POP, plaster of Paris. It is called hemi-hydrated calcium sulfate. Hemi means half. So as you can see here, calcium sulfate into 1 by 2 H2. By mistake, oxygen is not here, so I am going to write oxygen there. H2O. Okay. So calcium sulfate into half H2O.
हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ इंग्लैंड क्यों नहीं बोल दिया, प्लास्टर ऑफ इंडिया क्यों नहीं बोल दिया. So the reason is that because the plaster of Paris first time it is detected or it is manufactured or obtained in the Paris. So that's why that is known as plaster of Paris. So calcium sulfate into 2H2O. This is known as gypsum. It is the substance that is known as gypsum. When it is heated at 373 Kelvin, then it is split and form calcium hemihydrated. Again, oxygen is missing there, so I will write oxygen here. Okay. So hemihydrated calcium sulfate plus 1.5 H2O means वाटर इसके हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अलग हो जाता है और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उससे अलग होगा. तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2 पार्ट में टूट जाएंगे, हाफ मॉलिक्यूल जो कि कैल्शियम सल्फेट के साथ अटैच रहेगा एंड 1.5 मॉलिक्यूल जो कि अलग हो जाएगा. सो दिस वन कंपाउंड is known as plaster of Paris. Now this reaction can be reversible because we can form the gypsum with the help of POP. When this POP is going to react with water, then it form a hard solid mass that is known as gypsum. ये आपने देखा भी होगा कि पीओपी घर पे होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस. मान लिया हमारे घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या वाइट वॉश का काम चल रहा है, तो उस समय पीओपी आती है घर में. उसमें थोड़ा सा वाटर मिला के अगर आप उसको थोड़े से टाइम के लिए भी रख देंगे तो वो हार्ड होना शुरू हो जाता है और एक टाइम पे इतना हार्ड हो जाता है कि वो फिर टूटेगा नहीं. सो दैट इज gypsum. This plaster of Paris, it is used, it is in POP because it is a very important question that is it possible to make a water molecule half. क्या एक वाटर मॉलिक्यूल को हम हाफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते. और अगर नहीं कर सकते तो फिर ये यहाँ हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे आया? सो द आंसर इज देयर. In POP, 2 formula unit of calcium sulfate share 1 molecule of water. इसका मतलब हम बोलते हैं कि कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो वो 2 मॉलिक्यूल अगर एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड हैं तो उस एक वाटर मॉलिक्यूल में से उन दोनों का शेयर हाफ हाफ वाटर मॉलिक्यूल का होगा. सो हम हाफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं कर सकते. तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो दैट मीन्स कि कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल हमेशा इकट्ठे रहते हैं और वो उस एक वाटर मॉलिक्यूल में से हाफ हाफ शेयर करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस टाइम इट वाज द क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम. हाउ इट इज यूज्ड in making toys, decorative materials, making surface smooth, for supporting fractured bone. अब ये ई एक एक्स्ट्रा आ गया, कट करो इसको. For making fractured bone. So these are the uses, and most of the uses as I written here, making surface smooth, it is also used to make the different designing in the on the surface, जैसे हम लोगों के घरों में होती भी है. So it is very easy to understand. So this one is plaster of Paris. After that, the very big question, even this question is so important that हम बात तो करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है या जो है कैल्शियम सल्फेट है मीन्स जिप्सम है या फिर सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग पाउडर है, या फिर और भी जितने हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, क्या वो रियली ड्राई होते हैं? आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई या उनके पास वो वाटर मॉलिक्यूल है? सो दिस वन इज द एक्टिविटी विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. We have taken the example of copper sulfate. It contains 5 molecule of water with it. So what we do, we take copper sulfate in a test tube, and as you know that the copper sulfate is blue in color, you can see here. This one is blue in color. Here you can see. When this copper sulfate is taken in a test tube and it is heated over a flame, then by the heating, the water molecule which are present here,
They can be easily observed in the form of droplets in the inner side of the test tube. Remember one thing, before doing this activity, the test tube should be dry. क्यों ड्राई होनी चाहिए? क्योंकि अगर पहले से ही उसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये ड्रॉपलेट्स पहले वाली हैं या ये कॉपर सल्फेट में से निकली हैं. सो द टेस्ट ट्यूब मस्ट बी ड्राई. ड्राई टेस्ट ट्यूब में जब हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं, देन आफ्टर हीटिंग, मतलब जब हम हीट कर ही रहे होते हैं, देन वी ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट एट द इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब. सो कहाँ से आई वो ड्रॉपलेट्स? ऑफ कोर्स these droplets evaporate, means water which is present here, it evaporate from this copper sulfate. And you can easily observe one more change, that is the conversion of blue color powder into white color. क्योंकि उसमें से ड्रॉपलेट्स निकल जाएंगी तो कॉपर सल्फेट तब तक ब्लू कलर का शो होगा जब तक वो ड्रॉपलेट्स उसके अंदर हैं. So this blue color copper sulfate will turn into white color copper sulfate. What is the difference between the formula of these two? The formula of this one is CuSO4 into 5H2O, and the formula of this white powder is only and only CuSO4. But this reaction is easily reversible. As you can see in the picture, when we add some drop of water, again it will change into blue color hydrated copper sulfate. This one is hydrated copper sulfate, this is anhydrous copper sulfate, and this conversion is reversible. So this activity shows that yes, these salts contain water. On heating, it convert it into white colored compound copper sulfate. It is a reversible reaction. So I think it is clear to you. After that, I will share a PDF of the NCERT questions in text as well as NCERT exercise. But most of the questions I have covered in the slides, no need to repeat that again and again, otherwise there will be a lot of work for you. So better that you will note down only those answers which you will not get in the slides. Only those answers. Is it clear to all of you? Okay. Thank you, beta. Have a nice day and goodbye. Goodbye all.